Thank you very much. Uh, First of all, I would like to say few words regarding Pooja ji has presented. She has presented very nicely, and I think her focus were mainly on buyers. But I am going to present my presentation, and my focus will be on ultimate customer only. You and me. मेरा कहने का मतलब आम आदमी के बारे में है. आप लोग कहीं पर भी मार्केट में जाते हैं, यू परचेज योर गारमेंट, ओके. आपने कई तरह की प्रॉब्लम फेस की होंगी व्हेन यू परचेज. आपने अपने पास्ट में यू हैव फेस मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. कुछ प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे? कोई भी प्रॉब्लम आपने गारमेंट परचेज किया हो, उसमें फेस की हो? यस, साइज, या वेरी गुड. अदर प्रॉब्लम्स? So, yes. So I am starting from this point only. Let us discuss first problems we faced. Okay. आपने भी फेस किए, मैंने भी फेस किए हैं, सभी लोग फेस करते हैं ये प्रॉब्लम. दैट इज अल्टीमेट कस्टमर, आम आदमी जो फेस करता है. आई मीन टू से बायर्स जब परचेज करता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से, एंड द बायर जब कस्टमर को देता है. कस्टमर मीन्स हम लोग. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ओनली. यू कैन सी दिस स्लाइड. कलर that run faster than Usain Bolt. You just wash it and color will go. You will face this type of problem. For every wash you get a new garment. Yes. You may treat it this way. I am linking this only this way only. So this will be for you. Secondly, even if you wash your cloth along with the dyed garment, what will happen? Your washing machine is working just like a dyeing machine. It is very good for you. So you can use this way. Or now comes to the serious point. Should we segregate these types of garments? That is white and that dyed one. It may be, but it is not the real solution. तो real solution कहाँ पर है? Real solution है quality पे. Quality क्या है? That I will come. The problem क्या है? Problem है raw material. That is a fabric. That is a dyeing. That is the main problem. Secondly, if you see this slide, another main problem is color fastness to light. Sometimes these colors or dyes are very sensitive to light. It start fading when you line dry that. So what should be the solution? एक तो solution ये है, we dry it into shade. Or another is that we should have umbrella for each and every garment. So I don't think this is a real solution. He's conniving with the umbrella manufacturer. Yeah. Another problem is excessive wrinkles. Okay, you see this slide. Do you think you will look great in office in this dress? So, dog, you see the dog, what is his thinking? Okay. So, wrinkles should not be there. When we come out from car and we are going to office, our wrinkles should remove. This should be the garment. We need that type of garment only. You see the another one. Garment that shrink after one wash. You may use it for your child after one wash. Another button and skins that pop-ups. Very common problem. मैंने तो बहुत बारी फेस किया है. I don't know, मैं ब्रांड के हिसाब से नहीं चलता, जो सस्ता मिलता वो खरीदता हूँ. पर ये प्रॉब्लम मुझे बहुत मिली है. और मेरी बहुत सारी शर्ट्स, मेरी वाइफ भी जॉब में है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उसे मैं कन्विंस करूं कि बटन लगा दे. तो मेरी बहुत सी शर्ट ऐसे ही पड़ी हैं, मैं इसलिए ऑफिस में कई बार वो शर्ट पहनता ही नहीं. तो दिस इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम आई फेस. पर डोंट वरी अबाउट दैट. कुछ लोग ऐसी सेलिब्रिटीज ऐसी रही हैं और हैं, दे डोंट रिक्वायर बटन. यू नो द गब्बर सिंह. Even you know this man. Don't require anything. तो इनको कोई जरूरत नहीं है बटन की, पर फिर भी ये प्रॉब्लम है. We are facing the common problem as customer end. Now comes to the common problem of zipper. ये बहुत 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 खतरनाक प्रॉब्लम है. Embarrassing, बहुत बारी प्रॉब्लम हो जाती है.
एक्चुअल नेम इज स्लाइड फास्टनर, जिपर का एक्चुअल नेम स्लाइड फास्टनर है, हम जिपर कहते हैं, दिस इज रॉन्ग, बट एक्चुअल नेम इज स्लाइड फास्टनर, ओके, एंड इट कैन स्लाइड व्हेन इट वांट्स. Even you can see that you can treat it as a new type of zipper, but it is a fault. Even you see, you can use this way also, you make it fashion. See, this is the style. You can use that type of things and make it a style. See my new fashionable trouser. If you are having that type of problem, broken zipper, then you can make it fashion. You just open the buckle of your belt and you will see that there is a new fashion is there. As Pooja was saying, na, people will mimic the celebrities. So like, Even you use this way. This is another way. It will also give you good look, fashionable look. ये सेकंड मैं थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, दैट इज ए पकरिंग. ओके, one can use it as a design, but it is a real problem, and it is due to the differential shrinkage between swing threads and your garment or fabric, raw material. Okay, whenever they are having the differential shrinkage, for example, shrinkage percentage of garment or fabric is 3% and shrinkage percentage of that swing thread is 1%, you will get the differential shrinkage and you will get that type of problem. I will discuss later on that. I just टेलिंग यू द आम आदमी प्रॉब्लम. ओके, हम छोटे हैं, हम आम आदमी हैं, इसके आप घबराइए मत कि हम ही फेस करते हैं. सेलिब्रिटी का केस देखिए, स्लिप ऑफ, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू, यू कैन से द गारमेंट्स. जिपर प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे. ओके, पुअर क्वालिटी ऑफ जिपर लीड टू डिस्प्ले ऑफ बेयर बैक ऑन रेड कारपेट. इवन देयर इज अनदर प्रॉब्लम, स्लिप ऑफ शोल्डर. Same problem over here. You can see this is the another problem, and recently you have seen this one also. Okay, dress rip off. That is a maybe due to tight fit or maybe due to the poor quality of swing thread. That may be the problem. This is the another problem related to quality, and broken zipper. This is the another problem. बट ये जितने भी चीजें होती हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका सेल्फ कंट्रोल. यू मस्ट हैव सेल्फ कंट्रोल. कैसे आप उसे कंट्रोल करेंगे? यू कैन ओपन योर बेल्ट बक्कल इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ जिपर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दैट इज द वे यू कैन कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल इज नेसेसरी. सो यू कैन कन्वर्ट इनटू फैशन इफ देयर इज अ सेल्फ कंट्रोल. Now comes to the real question, what is quality? जब मैं बात कर रहा था तो क्वालिटी की बात हुई थी, किसी ने बोला था what is quality? Is it a quality or this or this? क्या ये सभी क्वालिटी हैं? To explain this, I have a very small, you can say, cartoon. It will explain all the things in very simple way. What is quality? It will define you quality. What is quality? You can see this. What is the problem? I like it. This is the customer, and the person who is looking after them is a aged one. उसको अच्छा नहीं लग रहा, but customer कह रहा I like it. So what is the quality? Quality is what the customer say yes, I need this. This is the quality. फटी हुई है जीन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई नीड दैट वन, यू हैव टू सप्लाई दैट वन. तो क्वालिटी की डेफिनेशन ये है कि दैट यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर और स्पेसिफिकेशन सेट बाय द कस्टमर. इन सिंपल वे, if you go to the standard definition of quality, what is the standard definition of quality? The totality of features and characteristics of a product or service that bears its ability to satisfy stated or implied needs. Or in simple way, the quality is what the customer say yes, I need that. This is the quality definition. If there is a quality, अब customer ने complain करेगा, तो customer की complaint क्या चीज है? An expression of dissatisfaction on a consumer's behalf to a responsible party. It means जिसने dealer है, seller है, कोई भी है, that way we are responsible party and customer, we are the customer. और जब हमें प्रॉब्लम आती है, हम लेके जाते हैं, या तो हम गुस्सा करते हैं, जस्ट लाइक अ डॉग,
वर्क, और फाइनली कुछ होता नहीं तो रो के वापस आ जाते हैं, ठीक है. दिस इज द कस्टमर कंप्लेंट. नाउ you want to satisfy customer, what you need. This is the serious talk I am going to do. Garment should be free from defects. Various types of defects are there: stains, defective seams, untrimmed threads, mismatch and misaligned buttonholes, shade variation. So many types of defects are there. Garment should be free from them. And even after that, the garment should have a characteristic that while in use, its color should not fade. Color fastness should be good, dimension it should be stable, and the instruction written on labels should be correct. And size of garment are very important. The size of garment should be as per the instruction written on the label. That is a very important thing if you want to have. For that, what you require a good inspection as well as quality control lab. It comes under quality control. If you do this way, you will be on the top. Okay. Now comes to the points. Sources of these consumer complaints. Consumer, मैं यहाँ consumer बोल रहा हूँ word. Now you treat it as a buyer or as a ultimate customer. First point is the raw material. The raw material you are sourcing from various sources. It starts from fabric, swing threads, button, hook and loop, fastener. Hook and loop fastener means, you know what is the meaning of hook and loop fastener? It is the actual name of Velcro. Velcro is not a correct word. You should use hook and loop fastener. Okay. The Velcro is the company brand name. If you write the Velcro word in any specification, government specification, there may be objection from different party that you are writing Velcro name, and Velcro is a brand name of a company. So actual name of Velcro is hook and loop fastener. Similarly, slide fastener is the name of zipper. Zipper is called slide fastener. Okay. So in the garment manufacturing, you must care about the swing defects, color effects, size defects, garments. So many defects are there. I will concentrate only on raw material because we generally discuss and we know something about this only. And raw material, if you are going to have fabric, then important things are color. कलर के कारण बहुत सारे आपके कंसाइनमेंट जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. डेल्टा ई वैल्यू, क्योंकि डायर के केस में डायर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है मैचिंग. दैट इज कलर मैचिंग ए डिफिकल्ट थिंग टू मैच. ओके. फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, ब्लेंड कंपोजिशन, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, फास्टनेस टू वेरियस एजेंसीज, peeling, tear, tensile, busting and wrinkle. These are the important characteristics raw material should have. Now why you require color? Let us investigate this question. Imagine a garden full of flower and you see that it is a black and white picture, but if it is a colored one you will like it. Okay, that's why you require color. So it gives you soothing effect, change the appearance, fashionable look, climate change indicator. Okay, in winter season you would like to have that darker shade, and in the summer season lighter or white shade you would like. Ceremonial indicators. Okay. Now comes to the color. Why I am going to discuss something of color? Because it is a very important thing. You must know about this color problem. Let me discuss something about this. परसेप्शन ऑफ कलर. कोई भी चीज जो है परसीव करता है कोई आदमी, यू रिक्वायर थ्री थिंग्स. इट इज वेरी सिंपल वन. लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. तीन चीजों की जरूरत है. अगर मैं इस रूम में बिल्कुल अंधेरा कर दूं तो यू विल नॉट एबल टू सी एनीबॉडी. सो यू रिक्वायर द लाइट सोर्स. इफ देयर इज नोबडी इज देयर देन यू विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग. सो वी रिक्वायर थ्री थिंग्स: लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. ये किस तरह ह्यूमन बॉडी के माइंड में रजिस्टर होता है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू. जस्ट सी दिस पिक्चर. दिस ऑब्जेक्ट बस, एंड इट इज गोइंग टू click and it will be there in the mind. In this way it registered in our mind. Okay. So जब हम ये चीजें होती हैं, you know now
three things. You always remember three things: observer, light source, and object. You require these three things. These three things make another group of, you can say, problem for the dyers as well as the buyer. You know something about metamerism? What is metamerism? It is a phenomenon observed when two specimens appears to have the similar color under one set of viewing conditions. For example, it has three types of metamerism: illuminant, observer metamerism, and geometry. Illuminant, you can see over here. Sometime when you see something in a one set of light, you will see that two objects are matching each other. They are having similar color. When you change the light, you will see that they are mismatching. It comes under the illuminant metamerism. एक बहुत बारी आपने देखा होगा when there is some dent or denting and painting you require in your car. So what is going there? They will paint your car in the auto garage. When you come out with that, you will see that there is a color difference. But in the auto garage, it is matching. So when the light source changes, you will get the different types of changes in that paints and other colors. So this color type of metamerism is called illuminant metamerism. This is the car. You can see this. The door is repainted. Now you see the difference. So it comes the illuminant metamerism. Okay. Another one is the observer metamerism. एक आदमी ने कोई कलर देखे, जैसे फॉर एग्जांपल बायर ने आपको कोई सबमिट किया सैंपल, उसके बेस पे यू हैव टू मैच दैट वन, यू हैव टू हैव दैट टाइप ऑफ सैंपल फ्रॉम योर डायर. डायर ने डाई करके दिया, आपने एक सेट ऑफ लाइट में देखा, D65 डे लाइट में देखा, इट इज मैचिंग, ओके. बट जब वही सैंपल आपने, जब दूसरा ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, कह रहा नहीं यार मैच नहीं कर रहा, इसमें डिफरेंस है, दोनों का ओपिनियन डिफरेंस है. इट कम्स अंडर ऑब्जर्वर मेटामेरिज्म. ओके. एंड थर्ड वन इज द ज्योमेट्री मेटामेरिज्म. फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री मेटामेरिज्म क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट में, ऑब्जर्वर में या किसी भी लाइट सोर्स में किसी की भी ज्योमेट्री अगर चेंज हो जाए तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट है जिसे आप देख रहे हैं वो अलग तरह से दिखाई देगा. फॉर एग्जाम्पल आप साहब जो बैठे हुए हैं, ओके सर, आपको यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है? आप खड़े होइए जरा. यू आर एबल टू से समथिंग? ओके. आप कुछ देख पा रहे हैं सर? आप क्या देख रहे हैं इसमें? एक राउंड सा. आप क्या देख पा रहे हैं? आप ये चीज देख पा रहे हैं. ऑब्जेक्ट सेम है, ज्योमेट्री चेंज हो गई, तो आपका सोचने का तरीका अलग हो गया. आप इसे कुछ कहेंगे और आप इन्हें कुछ कहेंगे. बैठ जाइए प्लीज. थैंक यू, थैंक यू. दिस इज द ज्योमेट्री मेटामेरिज्म. तो जब भी हम कभी भी अपने डायर से सोर्स करते हैं कोई भी डाइड फैब्रिक, तो क्या करना चाहिए? हमें वो फैब्रिक उन लाइट्स में चेक करना चाहिए जो कलर मैचिंग बूथ होंगे आपके पास, सभी के पास. उस कलर मैचिंग बूथ पे उन लाइट्स में चेक करना चाहिए जो हमारे कस्टमर ने, अल्टीमेट कस्टमर ने बोली हैं. ऐसा ही नहीं D65 डे लाइट में आपने चेक किया, यू मैच दैट वन, ओह इट इज मैचिंग. और जब कस्टमर एंड पे गया, उसने दूसरी लाइट में चेक किया, उसने मर्करी लैंप में किया या उसने किसी और लाइट में किया, इट इज नॉट मैचिंग. सो आपके पास जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए. आपको एक एक चीज पता होना चाहिए कस्टमर ने क्या चाहता है. कस्टमर कहता है कि हमारा जो ये लाइट है, ये जो फैब्रिक है, इट शुड मैच इन D65 एज वेल मर्करी लाइट. तो आपको उसी हिसाब से काम करना है. आपको अपने डायर को, जो डाई कर रहा है कपड़ा, उसे बताना है कि जो भी आप डाई यूज करें वो ऐसी डाई यूज करें कि वो मैच करे. ठीक है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसलिए मैं कलर के बारे में आपको कह रहा था, क्योंकि कलर के कारण बहुत सारे रिजेक्शन होते हैं और डाई हाउस का सबसे ज्यादा टाइम जो कंज्यूम होता है, दैट इज दिस मैचिंग ओनली. कई बार तो हम सोचते हैं कि क्यों मैचिंग के चक्कर में पड़ते, जो डाई किया वही पहन लो. अगर ऐसा ट्रेंड आ जाए, मैडम ने बोला, बहुत चीजें बोली, वेरी गुड, बहुत अच्छी फ्यूचर की बात करी, बट मैं जो फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ. अगर हम लोग जैसा मिल रहा है वैसा पहनना शुरू करते हैं, डाई के बारे में मैचिंग ना देखें, तो आप इतने ज्यादा पानी सेव करेंगे, इतना कार्बन क्रेडिट का जो चक्कर चल रहा है ना, पूछिए मत.
देखिए जितना भी डाई हाउस है, जो एक रिएक्टिव डाई को डाई करने में दे टेक 8 आवर्स, लेट अस टेक दिस वे, लेकिन मैचिंग करते करते वो 24 आवर्स चलता है मशीन। एनर्जी और वाटर कंजप्शन यू कैन सी हाउ मच दे आर वेस्टिंग। ओके, दिस इज अ रियल क्वेश्चन। मुझे लगता है कि वी शुड कन्विंस अवर बायर फॉर दैट। Dr. Parmar, Yeah. buyers are saying that when Dr. Parmar is here, he would be able to teach dyers how to get it right first time. 8 hours में सारा काम आपका ठीक हो जाएगा और you भी आपका एक जैसा इट इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे जेंट्स भी बैठे हैं, लेडीज भी बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। ओके, आप सभी लोग आजकल खाना बना लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप खाना बनाते हैं तो आपने एक चाय बनानी है, चाय भी बनाते तो हर बारी वो चेंज होता है, कभी आप स्टैंडर्ड नहीं बना पाते। एक बारी आपका हस्बैंड, जब आप हस्बैंड ने आपने चाय पिलाई अपनी वाइफ को, करी आज तो बहुत अच्छी बनी है, दूसरे दिन पिलाई, करी बहुत खराब बनी है, होता है ना, ये सब चलता है। इट्स मीन ये जितने भी जो भी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनमें बहुत सारे डाइज केमिकल्स लगते हैं, डाइंग के केस में यू कैन नॉट कंट्रोल, ये बाउंड टू कम, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट वन, बिकॉज स्लाइटली किसी भी चीज में चेंज हुआ, टेम्परेचर अगर आपको 90 डिग्री चाहिए रिएक्टिव डाई में, या 75 डिग्री चाहिए, 70 डिग्री चाहिए, उससे 72 डिग्री हो गया तो भी आपका चेंज हो जाएगा। You have to control so much of parameter. Of course, they give us a tolerance that delta E value should be equal to or less than 1, and there are some, they want that it should be equal to 0.5 or lower than 0.5 also. But they give the tolerance, but still, this is the main problem. Okay. We also face some problem when we purchase some garment. Okay. Tag में लिखा होगा it is 100% cotton, or when you check it, it will be polyester blended. This is a very common problem. अगर आप किसी भी मॉल में चले जाइए, वहां पे अगर गारमेंट खरीदे, मैं आपको बता सकता हूँ 60 से 70% आपको ऐसा मिलेगा कि उन्होंने कॉटन लिखा होगा और उसमें पॉलिस्टर मिक्स होगा। मैं तो टेक्सटाइल का रहा हूँ और मेरा केमिकली फील्ड रहा है, बट मैंने बहुत बारी फेस किया, पर मैं कभी कंप्लेंट करने नहीं जाता। दिस इज द अदर प्रॉब्लम। ओके, तो ये एक होना चाहिए, एथिक होना चाहिए, व्हेन वी आर गोइंग टू परचेज दैट टाइप ऑफ फैब्रिक, इट शुड label, it should follow the label. Okay, color fastness, these are the other problem, okay, we are facing. अगर आप इसको नट सेट में देखें तो जो भी आपको अगर पास टेस्ट रिपोर्ट आती है वो इस तरह की आती है। ओके, आप लोग टेस्ट रिपोर्ट रीड करते होंगे, ठीक है, यू माइट बी नोइंग दिस थिंग, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने, तो इसमें समझ पाते हैं आपने क्या क्या लिखा है, इनका क्या वैल्यू, क्या मतलब है। Change in color 4, staining on color 4 to 5. What is the meaning? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच सर। इट इज ए ग्रे स्केल। एक्चुअली ये कलर का जो चेंज इन कलर स्टेनिंग है, इट इज बेस्ड ऑन द ग्रे स्केल। एंड ग्रे स्केल क्या होता है? रीडिंग 1 to 5 के स्केल पे होती है। 1 मीन्स पुअर, पुअरर, एंड 5 मीन्स देयर इज नो चेंज इन द फैब्रिक। If you are getting your reading 4 or above 4, it's mean that garments or that fabric is good. It will work well. If you are getting less, then there is a chance of color bleeding during use. So this is the result of that report. You can say the color fastness perception you have seen, it is also given the gray scale only. Color fastness light. Color fastness light, if you are going to test ISO standard, there is a ISO standard 105 B02, okay, or IS standard is also there. So you will get that type of reading 3 to 4 on blue wool. You know blue wool? Blue wool is yes, blue wool is just like a gray scale, but there is a fabric, 8 standard fabrics are there. They are blue in color, okay, and they are numbered in this way 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 1 is the, if you get the reading 1, it's mean the worst one. Okay, if there is a, if you are getting reading 8, then it is a good one. Okay, so if you are getting your reading 5 and above 5, then your fabric is very good, light. Whenever you read this report, so you can understand these things, they are very important. Okay, similarly dimensional stability,
It depends on the customer requirement also, and you know that it is a very important parameter if you are going to make garment. Dr. Parmar, can I Yes. ask a question? Yes, sir. Since it's interactive. So when you say that in the color fastness to light, if it is above 5, then it's a good one. Would you take it as a blanket norm, or you would also refer to the customer specification sheet to see if there is a customer Yes. is asking a higher value than Yes, sir. Then you have to provide that way only. If the customer want that color fastness to light should be more than 6 or 7, but generally they don't want, because in the normal garments, 5 is the good one. Okay, but The but point- if the the customer point wants the is- 6, yeah, then you have to yeah. provide that way. The point is this is a good norm, Hmm. but don't undermine the customer specification, because sometimes there may be a special requirement, Yeah. and if you by chance miss it, you may get into trouble. So always reference to the specification sheet is important, but these norms are important to also keep in mind. But sometimes the yeah. I am coming out that only. Even car upholstery, most of the cases they are having a different type of test standard. Okay, for example, Maruti they are having different, Tata they are having different. In that case, what you have to do? In that case, you are exposing fabric for few hours. But in the case of car upholstery, you have to expose your fabric, that is car fabric or car seat covers, for around 300, 400, 500 hours. Continuous exposure is there. And after that, for example, in the case of Hyundai, 375 hours we have to expose. Okay. After 375 hours exposure, you have to see that what is your rating of that fabric on gray scale, 1 to 5 scale. If it is more than 3, then they accept it. If it is less than 3, then they will not accept. In the case of upholstery used in this automobile. In the same way, in the case of military, paramilitary forces, they require color fast light. It should be more than 6. Their special requirement that, because they expose various types of situations. Okay, they are going in hilly area, sandy area, and somewhere else. Okay, and the weathering effect will be more in their case compared to us, because we sit in the office and we are having a special type of protective areas. Okay, so we have to see the customer requirement also, and on general 5 is good. Similarly, dimension stability, that is the important thing. If you have not checked this one properly, the ultimate garment, you will see that I have shown you a picture that ultimately that garment may be used by your son or your daughter. Okay. Pilling resistance, tensile and tear strength, that is also very important. Okay, pilling strength is also pilling resistance also given 1 to 5 scale, and 4 is a good one. Above 4 is very good. Color difference, I already mentioned that whenever you take fabric from dyer, you have to see that thing. Color difference, the buyer want that it should be lower than 1 or equal to 1. Sometimes they want that it should be 0.5 or so. It depends on customer requirement. So you must understand that thing also, because what is written over here, the most important thing is delta E, and secondly LAB or LCH value. There are two types of values available. One is LAB and other one is LCH. Earlier what is going on, all the readings, all the delta E, that is color difference, was asked by buyer in LAB value. LAB, L indicate the lighter and darker portion. Okay. A indicate the redder and greener portion of the color, and B indicate the yellower and bluer portion of the color. But now customers start asking LCH, lighter and darker. L means, C means chroma, and H means hue. Because experimental and research has indicated that LCH value बहुत ज़्यादा करीब है human eyes के. That's why now they are converting to LCH value. Okay. So जब भी हम चीज देखें लिखा हुआ ऐसा आए हमारे सामने, अलग अलग रिजल्ट आए, डेल्टा ई वैल्यू के बारे में आए, तो वी मस्ट नो अबाउट दैट थिंग. डेल्टा ई क्या है? कलर डिफरेंस है. नाउ अनदर आइटम, वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, जिसके बगैर गारमेंट नहीं बन सकता, दैट इज स्विंग थ्रेड. बट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दिस स्विंग थ्रेड हियर ओनली. वी आर डूइंग सम वर्क, we are doing some research work,
और जब मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है आप मेरे से नाराज भी हो जाएं, बिकॉज इट विल इफेक्ट ऑन योर जॉब. We are working to prepare shirt, trouser without any stitching, and we could able to produce that one on loom. You just feed the yarn, you just feed the design, and you will have the shirt and you will have the trouser out of that. And we have prepared that one on loom. But it is not easy to say that it will be good, because you know that there is, if you see that garment, there is no stitch. It is just come out from the loom. Okay. So this work is going on, and जैसे मैडम बोल रही थी फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, that is also to take it as a future prospect. So sewing threads में what you have to test? Thread count, thread diameter, but most important parameter is shrinkage, dry heat and boiling water. That is a very important thing, because you know that it has, if there is a differential shrinkage between this one, fabric and sewing thread, you will face lots of problem. Another very important thing is hook and loop fastener. I already mentioned this is a Velcro. You generally know about that. In the Velcro, what you have to check? Generally, ये छोटे छोटे item है. You avoid to test that one. You avoid to see the quality of that one, but it work. Color fastener light, sea water, washing and caulking. These are the important parameter regarding that color fasteners property. Strength of tape, you must know about that thing also. Shrinkage and endurance testing. What is endurance testing? It is just like this one. You have to pull apart hook and loop fastener, male and female area. You have to pull apart that one. Okay. So this is the shear strength we have to test, and we have, as mentioned over here, the shear strength of all type of tapes shall not decrease by more than 10% of their original value after being subjected 5,000 cycle. It's mean if you are having hook and loop fastener, if you use this way, this is the hook and loop fastener, you can see. Okay. Okay. So what is this shear strength? You do this way and then again pull it. First, when you do this way, you just measure the what is the shear strength. What strength you require to open this one. Okay. This is your starting strength. Okay. Now you do this way 5,000 cycle. After 5,000 cycle, you measure this strength. What is the strength here? The difference should not be more than 10%. You want to have a pass fail criteria. Not more than 10%. Not more than 10%. That is the criteria we should have. नहीं अदरवाइज आपने देखा होगा कई बार बच्चों के इवन शूज भी होते हैं, उनका सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इसी में आती है, बिकॉज द क्वालिटी इज देयर, दे आर नॉट टेकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. यस यस. Along with this shear strength and other things, कई बार we see in this hook and loop, there is a lot of deposition of other fibers and yarns, Yes. which is making this sticking quality bad. Yes. We have some tests for that also to see the endurance and. नहीं, ये चीज तो आप कहाँ पर आपके, जैसे आपने ये यूज किया. Shoes में अगर हम देखते हैं, like when we are wearing shoes every day. And Actually, that problem is not directly related to this hook and loop fastener. If you see that one, that fiber, if you see that fiber, not from the hair, that is from शूज में से अपर में से आ सकते हैं, अपर में से आ सकते हैं. It is affecting the quality of the. Yes, of course it may affect. तो उसके लिए मेंटेनेंस करना जरूरी है. You have to remove that fiber. You know, just like आपने जैसे कॉम करते हैं, कंघी करते हैं सिर पर, we maintain that way. We have to maintain all the things. So we have to remove that fibers by hand. Okay. So this is another thing. These are the property. I am just skipping that one. So if you are having question, we can discuss later on. Okay. And these are the property we should check. The color difference here also, because you have to match that one with your garment. Another important thing is slide fastener. Slide fastener अगर आप देखें, गारमेंट्स में बहुत छोटी सी चीज होती है. अगर गारमेंट में बड़ी लाया हूं जिससे आप देख सकें दूर से, तो वैसे बहुत छोटी सी चीज होती है, बट अगर आप इसके टेस्ट के हिसाब से देखें और इसमें जितने आइटम्स लगे हुए हैं अगर वो काउंट करें, तो आप देखेंगे कि
गारमेंट से ज्यादा एसेसरीज इसमें लगी हुई है और गारमेंट से ज्यादा टेस्ट इसमें होते हैं। आप देखिए क्या क्या टेस्ट होते हैं इसमें। यू रिक्वायर कलर फास्टनेस प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, समटाइम यू हैव सीन दैट व्हेन यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ zipper or that slide fastener, color start bleeding after one wash. Okay, it gives the bad impression also. So color fastener perspiration, light, washing or organic solvent, that is a dry cleaning, etc. That is the important thing. Dimension and strength test, resistance to abrasion under load, textile chain width, ये chain की जो width है वो कितनी है, that we have to measure, lace width, exposed tape width, puller length, जो पुल कर रहा है उसका कितना लेंथ है, ये जो दिस इज द पुलर, ओके, व्हाट इज इट्स लेंथ, दैट इज आल्सो स्पेसिफिकेशन, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट थिंग आल्सो. मोनोफिलामेंट डायमीटर, जो फिलामेंट इसमें यूज हुआ, व्हाट इज द डायमीटर, दैट वन. सी द अदर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी ऑफ अटैचमेंट ऑफ टॉप स्टॉप, व्हाट इज द टॉप स्टॉप, लॉकिंग सिस्टम अबाव, दैट इज द टॉप स्टॉप. सिक्योरिटी अटैचमेंट ऑफ बॉटम स्टॉप, दिस इज द बॉटम वन, ओके. Security attachment of puller to slider which you are going to use. Fold over security of textile chain. There are a number of, you can say, the tests available for slide fastener. If you want to select the right type of this type of slide fastener, you have to do these tests. Now I have just 2-3 slides more. Care level, simple सी चीज है जो केयर लेवल पे लिखा होना चाहिए. It should follow that thing. At least इतना तो होना चाहिए कि अगर वो कलर फास्टनेस उसका वॉशिंग में पुअर है तो वी शुड मेंशन दैट वे, अदरवाइज वी विल फेस प्रॉब्लम. अल्टीमेट कस्टमर विल फेल this they are cheated. Dry cleaning and washing, so we can have that type of instruction. Now comes the label. It is also very small thing, but sometimes it gives problem. You can know that color fastener, if the color fasteners of these poor, छोटी सी चीज है पर कई बार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है. कलर फास्टनर, इफ इट इज कलर फास्टनर नॉट गुड, यू विल सी दैट कलर स्टार्ट ब्लीडिंग एंड इट विल गिव यू द स्टेन्स. Dimensional stability is not good, it will curl. If it is curl, it will give you itching effect. Okay, so it should be good. Blend composition as per the requirement of customer, we have to be soft to feel. Feeling इसकी अच्छी होनी चाहिए, otherwise it will give you harsh feel. Okay, so this is total presentation. I don't know you like it or not, but I just yeah. Thank you. Such a boring topic into a brilliant, entertaining and very educative. Thank you. I learned a lot from it. And एक छोटा question मेरे दिमाग में है about metamerism. Talked about Yes. and 3 types of metamerism. Yes. So in that you also talked about observer metamerism. Yes. How do you tackle that problem? It is very simple. You must be having the computer color matching system. I think you should start using computer color matching system. Spectrophotometer. It gives you the right type of reading. So generally, what is going on nowadays? All industries or garment industries they are having this type of computer color matching system. If you start that one, these types of problem, even they are having the facility to check in different types of light source, different types of angle. You can test that one. That is, the problem is not with the dyeing, the problem is with the observer. If the problem is related to observer, okay, then you have to use the computer color. But computer color matching is also very useful if you are going to check the color of, or you are going to match that one with that customer swatch you can check over there. The color difference is a very important parameter if you are going to sell some fabric over there. Okay, so delta E value you can determine with computer color matching system. फैब्रिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है. हाँ जी, हाँ जी. ब्लू हो गया या ब्लैक हो गया, तो सेग्रीगेशन विल बी पॉसिबिलिटी फॉर अस. सेग्रीगेशन. Segregation, yes. Segregation is a possibility, पर सब अब बड़ा डिफिकल्ट है सेग्रीगेट करना. संडे को कपड़े धोने पड़ते हैं तो पता चलता है साहब. सेग्रीगेट करेंगे या टाइम सब एक में जाने दो. Mara, I think I would like you to join, and then we can open the house for questions to both the speakers. And thank you for your wonderful presentation.